Now we have book page number 32, and that is parts of speech. Everyone know it very well, and it is very interesting as well as very important topic, parts of speech. Here is the example of definition and how can we define. We can say that each word in a sentence perform a function. Obviously every word in a sentence perform a function. We say that words has a function according to what part of speech it is. When we look at the words by itself, it is difficult to tell which part of speech it is, what part of speech it is. It is really difficult for the student to define part of speech like that. मेरे मुताबिक I recommend to use the easy way how you can explain your own understanding. आपकी अपनी understanding क्या है, आप उसको रख के तो आप इजी वर्ड्स चूज़ करके तो एक्सप्लेन करने की कोशिश किया करें. जैसे मैंने अपनी क्लास के बच्चों को बताया हुआ है, जब भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात आए तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे. इजी वेज, डिफरेंट पार्ट ऑफ लैंग्वेज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो हर एक फंक्शंस उनके अलग अलग होते हैं एक सेंटेंस में. ठीक है, जैसे ये एक आप समझ लें कि ये आपके पास एक सेंटेंस है, ये कॉपी इट इनटू योर एक्सरसाइज बुक. अब ये व्हाट इज कॉपी, व्हाट इज कॉपी, इट इज अ वर्ब. इट प्रोनाउन, इनटू preposition, your pronoun, exercise noun, book noun. So it is there are so many words and the parts of the language that is called parts of speech. ये मैंने इसको different कर दिया तो ये parts of speech हो गया. ठीक है, so different parts of language are called parts of speech. उसके बाद how many parts of speech are there? Everyone know that there are 8 parts of speech: noun, adjective, pronoun, verb, adverb, conjunction, preposition, interjection. इसके बारे में एक वीडियो ऑलरेडी SVT के लिए मैं दे चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको डेफिनेशंस और एग्जांपल्स बताई थी. एक दफ़ा हम इसमें रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको एक दफ़ा फिर से रिवीजन हो जाए इसके. व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड. इट कैन मे बी अ name of a person, place, animal, idea, thing, lots of thing. Everything in this word has a name and that is called noun. So there are the example: car, speed, Rihan, Lahore. Adjective. What is adjective? Describing word. It is describe noun like red, beautiful, 5. These are the examples. Pronoun. What is pronoun? Stand in place of noun. We can say that it is we use pronoun in place of noun: he, she, it, who. Verb. What is verb? Verb tell us of an action or a state of being. Verb is an action or a state of being, like is, was. Is, was are the helping verbs, helps and digging. Adverb. What is an adverb? Describe or add to meaning of a verb. Our student says that adverb is more about verb, and that is very easy way to define it. Adverb. Adverb means more about verb, like later. And there are 3 kinds of adverb: adverb of manner, adverb of time, adverb of place. Like later, quietly, softly, these are the example of adverb. Adverb mean more about verb. Conjunctions, joining words, join together word or parts of a sentence, like and, or, but, so. Prepositions. What are preposition? Show the relation between 2 nouns or a pronoun. We can say in our students say in a very easy way that preposition are the word that show the position of noun. Example: in, at, on, under. What is interjection? Interjection show the express our strong feeling. A word expressing feeling or emotion. हमारे इमोशन और एक्सप्रेस करते हैं फीलिंग्स को, जैसे ओ, अल्लाह, सुर. These are the example of the interjection. So what is noun? Naming word. What is adjective? Describing word. What is pronoun? Replace noun. What is verb? Action words or a state of being. What is adverb? What is an adverb? More about verb. Conjunction, joining words. Preposition show the position of noun. Interjection mean express strong feeling. So these are the parts of speech that are used in a sentence, and these are all have a perform a function in a sentence. So we have the activity related to it, and this will be solved on your book as well. Write the following, understand word in your notebook and give the function of each.
नोटबुक पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इधर ही कीजिएगा और लेड पेंसिल से कीजिएगा, ठीक है। ये हम लोग ऑलरेडी ये एक्टिविटी क्लासरूम में करते हैं, तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये आप इजीली यहाँ पे ही कर सकेंगे, ठीक है। ये हम 5 क्लास में 4 क्लास में सेंटेंस लिखते थे बोर्ड पर, और बच्चे उसको अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिफ़ाइन करते थे कि ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। उसी तरह उन्होंने ये किया है, बस उन्होंने इसमें पूरे पूरे सेंटेंस को नहीं कहा डिफ़ाइन करने को, जस्ट उन्होंने लाइंस लगाई हैं, अंडरलाइन किया, उन्होंने कहा वो बताएं वो वर्ड कौन सा है। जैसे द येलो स्नेक क्रॉल्ड आउट ऑफ अ होल, व्हाट इज़ येलो एडजेक्टिव, तो आप ADJ लिख दें, आगे डॉट लगा दीजिएगा। क्रॉल्ड वर्ब, ठीक है। शोएब, शोएब क्या है, नाउन, इज़ द डायरेक्टर ऑफ अ लार्ज कंपनी, लार्ज एडजेक्टिव। द टैप, नाउन। यस्टरडे, एडवर्ब, ठीक है। उसके बाद मी, प्रोनाउन। मॉर्निंग, नाउन। एंड, कंजंक्शन। फेड, आर फेड, वर्ब। सा, वर्ब। इन, प्रेपोजिशन, तो हमने PREP लिखा हुआ है, आगे डॉट डाल दिया। ये दायरेकम के बच्चों को पता है, ये इस तरह से ही हम इसको करते हैं। ओ, इंटरजेक्शन एंड न्यू एडजेक्टिव, ठीक है। तो इसी तरह आपने भी इसको अच्छी तरह से देख के, तो नोटबुक पे करने की ज़रूरत नहीं, इसको आपने बुक के ऊपर ही करना है सॉल्व। समझ आ गई है, और इसी तरह करना है, और उसके बाद मेरी वीडियो देख के आपने इसको चेक कर लेना है। ओके, दिस इज़ योर वर्क and we have done today exercise B and exercise C, book page number 31 and 32. Allah Hafiz.